ये बताइए। मेरी इवनिंग बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर होने वाला है एंड सेम ही वीक में दो अवार्ड फंक्शंस हुए हैं एंड इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स हो रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक तो आप लोगों से बार बार मेरी मुलाकात होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड ये जो साल था मेरे लिए बहुत ही अच्छा था. मैं बहुत कुछ सीखी और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला, अलग अलग लोगों तक पहुंचने का मौका मिला मुझे. तो आई एम वेरी हैप्पी. This is the best ending of the year 2021, so I'm very excited and I'm highly thankful to the organizers Mohammed Nagman Latif and Aditya Khurana and the Ottoman Mazel, everyone who sponsored this award, and it's so grateful to have such awards in our life. So I have been nominated as the most promising personality of Indian television for 2021. So I feel absolutely amazing, yeah, glad because अगर आपको किसी award से honor किया जाता है, so it means huge, right? So of course I'm very glad and grateful to everyone. Of course, getting a fresh face feels really good. It's getting me more freshness into myself and इसके साथ responsibility भी आ जाती है to carry on this ahead. And now I think after Big Boss, this is the first like event that I'm attending. So it's great. I'm looking forward. Absolutely. This is my first event after the COVID, and I'm here without a mask on a red carpet. So I feel really nice because it's like almost life is back. And सारे मीडिया वालों को देखकर भी इतना अरसा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है. And my first appearance only is an award show, so I feel very good about it. Full of receiving a lot of awards and good news and everything, so feeling good. I want to say thank you. Nobody's ever called me iconic, so yay, thanks. Well, it's not been too long since I've stepped into the industry. मैं अभी भी अपना पहला शो ही कर रही हूँ. And on Instagram you always see these award functions happening, and I remember very nicely that in my first year, obviously मुझे nomination ही मिला था, मेरे शो को कुछ महीने हुए थे, and I had seen this award function happening, all the TV celebs were there, and I was just like, wow dude, like I also want to be a part of this, and I hope I am one always aspires क्योंकि I think आप जो भी काम करते हो अपनी लाइफ में, आप उसी चीज़ के लिए, अगर आप अपनी काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, सो यू ऑलवेज वांट टू सक्सीड. एंड फ्रॉम दैट इन 2019 टू नाउ आई थिंक इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी. सो रियली हैप्पी. I'm a very moody person. I always go with the mood. Whatever I want to wear. And normally today I guess आज की competitive times में मतलब looking at today's generation and looking at today's youth, I mean to say our times are competitive. Everybody wants to have an ambition. Everybody wants to move forward in life, and there's nothing wrong in it. To be in such a place like in an award show all decked up with the people meeting them, meeting you all, it's a wonderful thing now. You are wearing red right now, and seems like you are already into a Christmas vibe. So Yeah. about your look. See, it means I am giving you all Christmas vibes. So see, I'm here to spread all the happiness. I was in a jolly mood, so thought why not select this color. I love this color, so I'm wearing it. Feels really good, something different. So big responsibility. You have to do a lot of more things. So that. This is for the international iconic fresh face of Indian cinema, because my movie is about to come, and I'm sure a lot of people know about it. The film name is The Conversion, and it is going to release in 2022, and we have already shot the climax finally, and film has faced a lot of hurdles. We all know about it, but now it is now slated to release very soon, but we have still not got the date, but very soon. So जो मुझे अवार्ड आज मिला है वो है द बेस्ट सिस्टर ऑन इंडियन टेलीविज़न, और मैं प्ले कर रही हूँ कृतिका लूथरा और कुंडली भाग्य, जो कि काफ़ी टाइम से बाय माता रानी की कृपा है काफ़ी टाइम से टॉप शो रहा है, और उसी के लिए आज आई एम होल्डिंग दिस प्रेस्टिजियस बेस्ट सिस्टर अवार्ड, एंड आई एम एक्सट्रीमली
वेरी हैप्पी बिकॉज ये मेरा पहला अवार्ड है, बट इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, इट्स बीन ईयर्स, एंड आई थिंक हर एक्टर का ड्रीम होता है कि एक दिन उसे अवार्ड से नवाजा जाए. तो आई थिंक मेरा आज वो दिन था, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल अवार्ड फॉर मी. इट्स अ मैसेज टू माई सेल्फ कि यू नो मॉम डैड, पहले तो उनके लिए आई डिड इट. दूसरी बात ये कि इट्स अ मैसेज टू माई सेल्फ कि लाइफ में आगे मेहनत करते रहो, तरक्की करते रहो, डोंट लुक बैक. सो माई जर्नी हैज़ लेवल्ड अप, आई थिंक. I'm doing 2 more singles. Then I'm doing a web series called Katputli. I have recently completed a short film, and yeah, so that's all.